Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome everyone to another lecture for design of machine elements. Um, Yesterday we studied about different kinds of loadings that you can encounter in real life. And for those loading conditions, how could you cater for and design for failure? कि किस तरह से आपने अपने डिजाइन को चेंज करना है based on those loading conditions के failure जो सा है वो आपके machine element के अंदर ना हो. And failure is normally classified as yielding or breakage in the machine part. The most common type of loadings were the static loading or static stress applied to the machine part. The second was repeated and reversed loading or the cyclic loading. Third one was the fluctuating loads. Then there were the shock or the impact loads, and then there was the random load. Static load was when you actually apply a load on the system on the machine part, and then you keep it constant over there. Cyclic load is when you have a reversal of the stress, and the stress is applied in cycles. So there are positive cycles and the negative cycles with maximum values, mean value, and a minimum value as well. With the fluctuating load or fluctuating stress, you also have a positive or a negative mean value of the stress as well, along with the cyclic nature. The frequency of the cycles may vary throughout the life, but it has a cyclic nature as well. The shock or impact loading was when you have a sudden load with the high amplitude, but the application of load is very small, so it actually happens for a very small duration. And random loading was when you don't know the nature of the loading. Sometimes you need to have a statistical analysis to find out for what percentage of the time the loading was static or dynamic in case of cyclic, or was it a fluctuating load, and then you can design accordingly. Now, if you know the type of loading, you can actually design according to some failure theories to prevent failure. कुछ ऐसी theories available हैं टैक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल्स के लिए जिसको आप जहन में रखते हुए अपना डिजाइन जो है वो पूरा कर सकते हो. फॉर एग्जांपल फॉर स्टैटिक लोडिंग, अभी जो हम फेलियर थ्योरीज की बात करें, these are for static loadings. There is a theory called maximum shear stress theory जिसके अंदर जो सा है वो shear strength की जिक्र करता है वो कि if you have done uh, if you have done that tensile testing, तो उस वक्त अगर मटेरियल की आपको shear strength जो है वो मालूम हो, तो if any part in the machine part or any section of the machine part is subjected to more shear stress than that, तो उसके अंदर फेलियर होगा, यानी कि वो अपने yield point से ज़्यादा चली जाए. इसी तरह से there is a maximum normal stress theory that kind of is for brittle elements, और वो compressive strength के ऊपर जो सा है वो बेस करती है. Theories give us an idea कि क्या जहन में रखना चाहिए डिजाइन करते वक्त for the case of static loadings. So there is something called a distortion energy theory, which utilizes another stress type called von Mises stress.
And since as per our discussion yesterday, आप लोगों ने ये point out किया था कि आप लोगों ने Mohr circle नहीं पढ़ा हुआ. So maybe you don't also have an idea about von Mises stress as well. But this von Mises stress can be found on stress elements on a structure, and it's used for deciding on criteria of failures. So जब SolidWorks के अंदर हम आगे स्टैटिक एनालिसिस के ऊपर जाएंगे, वहां पे वॉन मिसेस स्ट्रेस वुड बी वन ऑफ द की क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग ऑन फेलियर डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल यू चूज एंड डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. वहां पे इस चीज को हम देखेंगे, तो इसका नाम ज़हन में रखिएगा. आगे जाके इसको जो सा होगा हमें दोबारा शायद यूज करना पड़े. So in short, design for static loading involves you to find principal stresses as critical at critical point using Mohr circles approach, or there are some other approaches as well. Principal stresses यानी कि आप मुख्तलिफ sections के ऊपर stresses को ढूंढते हो, क्या होगा, shear stress को, tensile stress को, compressive stress को ढूंढते हो. और criteria of the failure depend करता है material के ऊपर कि is it ductile or is it brittle. For ductile materials, you need to look at the yield strength of the material. For the brittle materials, you need to look at the ultimate strength limit of the material. So it depends on the type of material. उसकी बुनियाद के ऊपर आप ये डिसाइड करते हो कि आपने किस स्ट्रेंथ को जो सा है वो इस्तेमाल करते हुए अपने डिजाइन को आगे लेके चलना. But in the case of cyclic loadings, since the load is repeated और उसका मैग्नीट्यूड जो सा है वो साइकिल का रहा होता है, पॉजिटिव साइकिल्स होते हैं, नेगेटिव साइकिल्स होते हैं, वहां पे फेलियर क्राइटेरिया जो सा है वो ना सिर्फ हमें देखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स ऑफ द साइक्लिक लोड, जो कि आप ऑब्वियसली डिटरमिन करोगे बाय द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल और द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. लेकिन उसके साथ साथ आपको एंड्योरेंस लिमिट का जो सा है वो भी देखना पड़ेगा टू प्रिवेंट फटीग फेलियर. फटीग फेलियर के बारे में हमने पहले काफी डिटेल में एक वीडियो भी देखी थी, और भी हमने उसके बारे में जो सा था वो कुछ बेसिक थ्योरीज देखी थी, एंड वी आल्सो डिटरमिन्ड हाउ वी कैन फाइंड आउट. और साइक्लिक लोडिंग को अमूमन फटीग लोडिंग भी कहा जाता है. और हमने ये देखा था किस तरह से क्रैक्स प्रोड्यूस होते हैं सरफेस के ऊपर, एंड देन दे प्रोपेगेट विद ईच साइकिल डीपर इनटू द मटेरियल, डीपर इनटू द पार्ट, और वहां पे जो सा है वो दे कॉज अ सडन रप्चर और अ सडन फेलियर एविडेंटली. तो सिर्फ अल्टीमेट स्ट्रेंथ का या यील्ड स्ट्रेंथ का पता होना काफी नहीं है. इफ द फेलियर can occur due to the cyclic loading, you need to understand another quantity जिसको हम कहते हैं endurance limit. This is coming from chapter number 5 by the way. तो endurance limit जो है किसी भी मटेरियल की वो लिमिट है जिसके ऊपर fatigue failure can occur for a certain number of cycles. उसके नीचे नीचे fatigue failure नहीं होगा irrespective of how many cycles are applied, how many loading cycles are applied on the material, as long as you obviously keep them within the yield strength of the material. अच्छा, तो fatigue failures are often classified as low cycle failure or high cycle failure due to the fact that the mechanism of failure is a little bit different. For low cycle failures, we normally consider fatigue to be, or the loading cycles, the number of loading cycles to be less than 1000 typically. अगर 1000 से कम लोडिंग साइकिल्स के ऊपर फेलियर हो जाए तो उसको लो साइकिल फेलियर कहा जाता है, और अगर 1000 से ज्यादा साइकिल्स में फेलियर हो जाए तो उसको अमूमन हाई साइकिल फेलियर कहा जाता है. अब लो साइकिल फेलियर की खासियत ये है कि वहां पे इस तरह से क्रैक्स डेवलप नहीं होते
जिस तरह से हाई साइकिल फटीग फेलियर के अंदर होते हैं. Low cycle fatigue failure normally occurs when you take the material beyond its elastic limit into the yield region and then you reverse the loading cycle और उसके बाद जो है उसको दोबारा से आप जो है उस पे लोड अप्लाई करते हो. सो एन एग्जांपल वुड बी जब आपने कोई मेटालिक वायर जो सॉलिड वायर होती है उसको आपने तोड़ना हो तो आप क्या करते हो उसको रिपीटेडली मरोड़ते हो एक तरफ फिर दूसरी डायरेक्शन में फिर पहली डायरेक्शन में. तो 4 5 6 साइकिल्स के बाद उसके अंदर जो है वो तार टूट जाती है. उसकी वजह ये होती है कि यू आर एक्चुअली टेकिंग इट बियॉन्ड द यील्ड लिमिट्स एंड विद कॉन्टिन्यूअस रिवर्सल्स आप उसको जो है वो इजीली रप्चर पॉइंट पे ले आते हो. बट इफ द नंबर ऑफ लोडिंग, if you know that the machine is going to be loaded for more cycles, तो आपको वहां पे जो सा है वो हाई साइकिल फेलियर कहलाता है उसे. वहां पे मैकेनिज्म क्या होता है कि देयर आर स्मॉल क्रैक्स दैट अपीयर ऑन द सरफेस और उनमें से कोई एक प्रोपेगेट करता है एंड देन इट मूव्स डीपर इनटू द मटेरियल एंड इवेंचुअली द मटेरियल रप्चर्स और उसको हम हाई साइकिल फेलियर कहते हैं. ठीक है, तो लो साइकिल फेलियर में ऑल्सो अकर ड्यू टू एक्सीडेंटल ओवरलोडिंग. शॉक उसके ऊपर लग जाए मटेरियल को, जैसे कि शॉक ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग. ये एयरक्राफ्ट्स के अंदर अगर देखा जाए तो लैंडिंग के दौरान हो सकता है उसके लैंडिंग गियर के ऊपर थोड़ा शॉक लग जाए या अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है. इस तरह की सिचुएशंस की वजह से लो साइकिल फेलियर हो सकता है. सो दैट kind of creates local stresses that exceeds the strain or the yield of the material और वहाँ पे जो है उसकी वजह से. So there was an additional task for you yesterday. I hope that everyone watched this video. This video contains very good information on fatigue failure. अब मसला ये होता है कि जब एक मटेरियल के अंदर क्रैक अपीयर हो जाए या वो साइक्लिक लोडिंग के अंदर हो, so eventually it might fail. There is always a chance for it to failure, no matter how good you design it to be. तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है उसकी फेलियर प्रिडिक्शन है, कब जाके फेल करेगा, मजीद कितने साइकिल्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और उसकी प्रोडक्ट लाइफ अब कितनी बच सकती है. बट दैट इज समथिंग which is which is called which normally goes into the section of fracture mechanics. कि क्रैक किस तरह से प्रोपोगेट करते हैं किसी किसी मटेरियल के अंदर, बिकॉज डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट लेयरिंग प्रॉपर्टीज, डिफरेंट क्यूबिक स्ट्रक्चर. So sometimes to predict failure there are different types of fracture mechanics that you have to consider based on the material. और उस बेस पे आप डिसीजन लेते हो कि किस तरह से कितनी लाइफ जो सी है बची है इस मटेरियल की, एंड हाउ मेनी how much will time will it take to for the crack to propagate through the material and the catastrophic failure to occur. Um, so the point is that we looked at these curves known as the SN curves. SN curves किस तरह से बनाए जाते थे कि we used to have materials at different loading cycles. तो on the y axis आप देख सकते हो ये y axis के ऊपर यहाँ पे stress amplitudes given है in megapascals and in KSI both. So on the y-axis, there is the stress, and there were specimens created of the same materials. एक ही material के कई specimens create किए जाते थे. It was loaded onto the fatigue testing machine. वहाँ पे जो सा था उसके ऊपर different loading cycles apply किए जाते थे. And for each type of loading cycle, the total number of cycles before failure were being found out. कितने cycles के बाद failure होगा. एंड यूजुअली सिमिलर स्पेसिमेंस को बार बार उस मशीन पे रख के जो सा था वो टेस्ट किया जाता था. सो दिस फिगर शोज the ascent curve and endurance limits of different materials.
So there is 4140, ये स्टील का ग्रेड है, इसी तरह से 4340 ग्रेड है, और इसके साथ साथ इसकी हार्डनेस भी गिवन है, HB475, HB275. सो हार्डनेस ऑन द ब्रिनल स्केल इज आल्सो गिवन. नीचे वाले जो से हैं, these are two grades for aluminum. So AL20240 T6, AL6061 T6, and there is also a simple low carbon steel 1020, और इसकी हार्डनेस जो CHB120 ये भी गिवन है. अच्छा, so for every test specimen you get a single point on the curve, and there is a spread in between these 2 points. तो अगर आप सेम स्पेसिमेन को सेम लोड के साथ जो सा है वो टेस्ट करोगे, it might fail a little bit before or after the total number of cycles for the previous specimen, because of the way the cracks propagate within the material. So the failure may be a little bit different um, at each specimen test. So what they do is they create a best fit curve for each specimen. तो हर मटेरियल के बहुत सारे स्पेसिमेन टेस्ट किए जाते हैं, और ये बेस्ट फिट कर्व जो सी है वो डिज़ाइन की जाती हैं. बट देयर इज अ लिटिल स्प्रेड, प्लस माइनस कुछ 1000 साइकिल्स का स्प्रेड होता है, जो कि इसके अंदर जो सा होता है वो आमतौर पे रखा जाता है. To cater for the spread, what they do is they kind of shift the whole curve a little bit downwards, ताकि जो चांस है फेलियर का या स्प्रेड का, जो स्प्रेड की वजह से जो गलती का चांस है, एरर का, वो कम से कम हो जाए. इन एनी केस व्हाट दीज कर्व्स टेल मी कि हम इसमें से पहला मटेरियल ले लेते हैं 4140. दिस इज द हार्डेस्ट ऑफ दोज मटेरियल्स, और 4140 से मुझे पता लग रहा है कि इट्स लाइक अ माइल्ड कार्बन स्टील विद सम अदर एलॉइंग एलिमेंट्स accompanied with it as well. तो 1000 साइकिल्स से पहले पहले लो साइकिल फैटीग कैटेगराइज किया गया है. So before 1000 cycles, the fatigue is termed as low cycle fatigue, and after 1000 cycle, the fatigue is termed as high cycle fatigue. अब इस पूरी कहानी के अंदर मुझे ये पता लग रहा है कि अगर मैं 1000 मेगा पास्कल्स पे इसको लोड करूं, इस मटेरियल को, so there is a high chance that the material will fail at around this many number of cycles. You can see that the graph is logarithmic on the y-axis, sorry, on the x-axis, or y-axis पे भी है by the way. So this would be around maybe 3000 cycles, or around 3000 cycles. तो अगर 1000 megapascals के ऊपर लोड किया जाए, तो मेरा जो first material it will fail around 3000 cycles. And if I load it a little bit lower, इसको 600 megapascals के ऊपर अगर मैं लोड कर दूं, if the applied load is a little bit lower, तो आप ये देख सकते हो कि it never cuts the curve for the 4140 material. उसकी वजह ये कि the material has an endurance limit above 600 megapascals. So that's around 670 or something megapascals. तो ये जो एक जहां पे जाके ये कर्व फ्लैट हो जाता है, this is known as the endurance limit of the material. Endurance limit से नीचे नीचे रख के उसको आप ऑपरेट करोगे, so there's a very low chance of failure due to fatigue. उसके अंदर fatigue propagation जो सी है वो क्रैक propagation डेवलप नहीं होगी, क्रैक्स ही डेवलप नहीं होंगे. मटेरियल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि उतने लोड के लिए वो जितने मर्जी नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल्स आप उस पर इस्तेमाल कर लो, फेलियर नहीं होगा. So the endurance limit for 4140 material was around 700 megapascals. For 4340 with the Brinell hardness of 275, it is around 440 430 megapascals. ठीक है, तो इसी तरह से जहां पे जाके ये कर्व फ्लैट हो जाएगा,
उसके नीचे नीचे जो सा होगा वो आप एंड्योरेंस लिमिट का जो सा वो रीजन कंसिडर कर सकते हो. सो इफ यू आर डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट using that particular material, so you need to understand about the endurance limit of the material, और उसके नीचे नीचे रख के आपने स्ट्रेंथ को यूज करते हुए जो सा है वो अपने अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करना है. ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? So these fatigue property data for different materials and curves are also sometimes tabulated. एक टेबल की फॉर्म में भी गिवन होते हैं जिसके अंदर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, फटीग लिमिट, उस कर्व का क्या स्लोप था, कर्व ने कहाँ पे जाके इंटरसेप्ट किया था वाई एक्सिस को, वहां पे जो सा था वो गिवन था. But the reality is that these curves after extensive testing do not give us very accurate result about the endurance limit of the material. Endurance limit और भी कई factors पे depend करती है, including the loading conditions as well. So the cyclic loading applied to the material may not actually have a zero mean. तो उसके अंदर जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ही एक्यूरेट साइक्लिक लोडिंग हो, उसके अंदर कोई एडिशनल लोडिंग ना हो, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट लोडिंग ना हो रही हो. इन मोस्ट रियल लाइफ सिनेरियोज द लोडिंग इज वेरी वेरीड, उसके अंदर काफी ज्यादा डिफरेंसेस और फर्क होते हैं. तो दिस कुड बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. यहाँ से आप एंड्योरेंस लिमिट को देख सकते हो, दिस कुड बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. लेकिन द एक्चुअल एंड्योरेंस लिमिट दैट हैज टू बी एस्टिमेटेड विद along with this limit as well. एक एंड्योरेंस लिमिट हमारे पास आ रही है यूजिंग द एसएन कर्व्स. दिस कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, बट द एक्चुअल एंड्योरेंस लिमिट वो असल में क्या होगी, दैट हैज टू बी कंप्यूटेटेड. और वो जो सी है वो दिस इज फ्रॉम सेक्शन 5-6 फ्रॉम द बुक. इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम ऐसे कंपोनेंट्स डिजाइन करेंगे जहाँ पे साइक्लिक लोडिंग रिक्वायर्ड होगी. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल शाफ्ट्स होगी, फॉर एग्जांपल बेरिंग्स होंगे. तो इस तरह के कंपोनेंट्स के लिए you need to have an idea about the endurance limit of the material जहाँ पे cyclic loading लग रही होगी. So the actual endurance limit depends on a lot of other factors, including the surface finish. कि किस तरह की surface finish है material की. The rougher surface finish there is a higher probability of the crack development on the surface of the material. इसी तरह से कुछ material factors होते हैं. मटेरियल फैक्टर्स के अंदर जो सा है वो टाइप ऑफ मटेरियल आ सकता है, उसके अंदर उसके रेडियसेस आ सकते हैं डिफरेंट जो उस मटेरियल के अंदर है. टाइप्स ऑफ स्ट्रेस फैक्टर हो सकता है इसके अंदर इंक्लूडेड कि किस तरह का उस पर स्ट्रेस लग रहा था. वाज इट simple cyclic loading, did it have another mean value in it, did it also have an impact loading, किस तरह का स्ट्रेस उसके ऊपर लग रहा था उसकी वजह से. इसी तरह से रिलायबिलिटी फैक्टर एक होता है कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर इन योर कंप्यूटेशंस. वहाँ उस बुनियाद के ऊपर आप अपने डिजाइन स्ट्रेंथ जो सा होता है उसको चेंज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर डिसीजन ऑफ हाउ कॉन्फिडेंट यू आर अबाउट योर कंप्यूटेशंस. या आपको जो गिवन डाटा है उसके अंदर आपके अंदर रिलायबिलिटी कितनी है. देन देयर इज द साइज फैक्टर कि किस तरह से साइज वेरी कर रहा है शाफ्ट का या किसी और cyclic loaded material का. There are also other factors like the temperature, the non-uniform material properties, the material handling properties, किस तरह से आपने material को handle किया. Stress ratios होती हैं different तरह के. corners तो नहीं है कि आपके पार्ट के अंदर जो आपने डिजाइन किया है कि आप कॉर्नर्स को स्मूथ आउट कर सकते हो, या उसके अंदर जो सा है वो सडन चेंजेस तो नहीं डायमेंशंस के अंदर दैट आल्सो क्रिएट सरफेसेस जहाँ पे क्रैक प्रोपेगेट कर सकते हैं. तो द एक्चुअल एंड्योरेंस लिमिट विल बी स्पेसिफाइड फ्रॉम सेक्शन 5-6, और इसको जो सा होगा हम उस वक्त यूज करेंगे जब हम आगे साइक्लिक लोडिंग को देखेंगे. तो टू सम इट अप, टू डिजाइन फॉर मटेरियल्स अंडर साइक्लिक लोडिंग you also need to consider endurance limits apart from the yield strength and the ultimate strength of the material. Lekin the actual endurance limit has to be computed and it has to be accounted for by also taking into account a number of other factors apart from the simple SN curve.
there were also some criteria for failure based on these cyclic loadings, some of which are the Soderbergh criteria, the Goodman criteria, the Gerber criteria. So this is a self-study assignment coming from sections 5-7 and 5-8 of the book. This will give you some idea about how to design for cyclic loading, और basically इसके अंदर जो सा theme है वो यही है कि you need to have an estimate of the endurance limit of the material, और उसके बाद आप उसको यूज करते हुए डिजाइन करते हो. Finally, there is one more thing, something called design factors that also have to be included in the design. Design factors are factors of safety जो कि आप अपने लोड कैरिंग कंपोनेंट के साथ एसोसिएट करते हो जब आप उसको डिजाइन कर रहे होते हो. So in most cases, the strength of the material is divided by the design factor to determine a design stress. तो ये डिजाइन फैक्टर्स इसलिए रखे जाते हैं डिजाइन के अंदर to take care of all the uncertainties about the actual working of the material. आपको असल में अगर ना पता हो कि किस तरह की exact loading उसके ऊपर लगेगी, या maybe about the weather conditions, या maybe you don't know about the temperature conditions, या maybe you don't have an exact idea about the surface finish of the material. Also during manufacturing there are part variations. When जब मैन्युफैक्चर हो रहा होता है कोई भी प्रोडक्ट तो उसके अंदर हर पार्ट के अंदर थोड़ी बहुत टॉलरेंसेस और वेरिएशंस जो होती हैं वो रह जाती हैं. So to cater for all those uncertain factors, you add another factor into your design, which is known as a design factor, जो कि कई तरह के हो सकते हैं. And as a designer, you must evaluate what reasonable value of the design factor should be used for a given situation. और सिलेक्शन इसकी किस बेस पे होती है वो मैंने बताया कि इट हैज अ लॉट ऑफ डिपेंडेंसीज लाइक द एप्लीकेशन, द एनवायरनमेंट, द नेचर ऑफ द लोड्स, स्ट्रेस एनालिसिस उसके ऊपर, मटेरियल प्रॉपर्टीज, और एट द एंड अगर आपको ये भी देखना होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंटली अपने कैलकुलेशंस को जो है वो रिफ्लेक्ट कर सकते हो, क्या आपके पास जो इक्वेशंस हैं, जो मॉडल हैं, वो कितने एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको जो है वो दे रही है. So for ductile materials, your design factor may vary from 1.25 to 4 depending on the type of loading. So for if the load are very static and you have very high confidence in all the design data, अगर आपको पता है कि आपके पास सारा डाटा बहुत एक्यूरेट आ रहा है and the loads are static, उसके अंदर कोई सडन लोडिंग नहीं होगी, तो आप क्या करोगे, अपनी yield strength को मल्टीप्लाई कर दोगे बाय 1.25 और उसके बाद उस वैल्यू को एज अ डिजाइन वैल्यू रखते हुए जो है वो यूज करोगे. या यू कैन से कि दीज डिजाइन फैक्टर्स आर डिवाइडेड बाय द टोटल स्ट्रेंथ, और उसको जो सा होगा जहन में रखते हुए यूज करोगे. सो इफ द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इज लेट्स से 100 KSI, तो आप क्या करोगे, इफ यू आर टेकिंग अ डिजाइन फैक्टर ऑफ 2, तो आप इसको सिंपली डिवाइड कर दोगे 2 से, और आप अपने डिजाइन के अंदर डिजाइन स्ट्रेस को यूज करोगे 50, और आप ये एज्यूम करोगे 50 KSI लोडिंग के बाद फेलियर हो जाएगा. सो यू आर एक्चुअली टेकिंग इनटू अकाउंट सम अनसर्टेनिटीज, और उसके बाद उसकी बुनियाद के ऊपर आप जो है वो फेलियर को कंसिडर करोगे. But if you are looking for design of machine elements under dynamic loading, but you also have an average confidence in all the design data, अगर लोडिंग भी जो है वो डायनामिक है और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं है जो आपके पास डाटा अवेलेबल है कंप्यूटेशंस के अंदर भी, तो आप अपना फैक्टर डिज़ाइन फैक्टर उसी लिहाज से ज़्यादा कर लोगे. सो यू कैन रेंज इट फ्रॉम 2 to 2.5 एज वेल, or you could take it up to 4 or even higher than 4 depending on some material properties or stress analysis. या आपको लोडिंग का नहीं पता, फ्लक्चुएटिंग लोड्स हैं या अनसर्टेन उसके अंदर लोडिंग्स हो सकती हैं, इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, तो इस तरह से आप उसको डिजाइन कर सकते हो. तो इसकी एक मिसाल इस तरह से भी हम दे सकते हैं कि फॉर द केस ऑफ शाफ्ट,
The actual design factor depends on what kind of application is it used for. Is it connected to a simple electrical motor? क्या वो शाफ्ट जो सी है वो इलेक्ट्रिकल मोटर से कनेक्टेड है जिसके अंदर नॉर्मली स्मूथली स्टार्ट होती हैं इलेक्ट्रिकल मोटर्स और स्मूथली जो सा होता है वो अपनी रोटेशन खत्म करती हैं. सो देयर आर लेस चांसेस ऑफ शॉक लोडिंग. But if you talk about diesel engines or IC engines like two stroke engines, वहाँ पे impact loadings हो सकती हैं, वहाँ पे loading cycles होते हैं और वो loading cycles जो से हैं उसके ऊपर shock loading produce कर सकते हैं shaft के ऊपर. So for those cases you use a design factor of about 3 to 4. सर ये n क्या है? N basically design factor को जो सा होता है represent करता है. ये सारी चीजें आगे अपने डिजाइन्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे. सो वी आर बिल्डिंग अप ऑन इट. और हम इस बुक के अंदर जो नोमेनक्लेचर यूज किया हुआ है वहां पे n रिप्रेजेंट्स अ डिजाइन फैक्टर which could be any factor between 1.25 to 4 or even more than 4, जो कि आप एक्चुअल अपनी डिजाइन स्ट्रेंथ के लिए या डिजाइन लिमिट्स के डिफाइन करने के लिए यूज करते हो. For brittle materials, because the failure can occur suddenly, yield नहीं होता directly ultimate strength को आप deal करते हो. You sometimes have to use a higher design factor value, so it may reach from 3 to 4 or 4 to 8 depending on the type of loading, material properties, stress analysis or the environment. ठीक है. So to sum it up, इसके बाद हम जो सा होगा इस सेक्शन के बाद हम नेक्स्ट वीक से यूज करेंगे, डिजाइन स्टार्ट करेंगे टिपिकल मशीन एलिमेंट्स का लाइक गियर ड्राइव्स, बेल्ट ड्राइव्स, इसके अलावा पावर ट्रांसमिशन यूनिट्स, इस तरह की चीज़ों का हम असल में डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे. तो उस सारे के पीछे डिज़ाइन फिलोसफी क्या है, या इन जनरल मैकेनिकल एलिमेंट्स जब आप डिज़ाइन कर रहे हो तो क्या डिज़ाइन फिलोसफी आपकी होनी चाहिए कि यू नीड टू इंश्योर सबसे पहले कि मशीन पार्ट जो आप डिज़ाइन कर रहे हो दैट इज सेफ फॉर ऑपरेशन अंडर रीजनेबली फॉरसीएबल कंडीशंस. ऐसा तो नहीं है कि आपने अपनी कार को डिज़ाइन करना है इस चीज़ के लिए कि उसकी टक्कर भी हो जाए किसी खंबे के साथ तो फिर भी वो सही चलेगी. नहीं, यू डिज़ाइन योर पार्ट्स फॉर सम फॉरसीएबल कंडीशंस और उस बुनियाद पे जो सा है वो आप अपने डिज़ाइन डिसीजंस लेते हो. डिज़ाइन डिसीजंस वुड इंक्लूड choosing the correct endurance limit. It may also include choosing the correct design factors. It may also include choosing the correct type of loadings that may be applicable to the part during its life. और उसकी बुनियाद के ऊपर आप उसका मटेरियल चूज करोगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिफाइन करोगे एंड सो ऑन. So some conditions that you can consider for design are as follows, like they are application, the type of application, the type of environment it has to work in, the type of load it has to bear, and the type of stresses that may occur on the material part. क्या material वो हो सकता है, and at the end of everything, how confident you are about the total calculations कि उसके अंदर आपको कोई और ऐसा फैक्टर तो नहीं मिस हो रहा. क्या टेम्परेचर तो ऐसा फैक्टर नहीं है. अगर आपको टेम्परेचर के बारे में डाटा नहीं मालूम या आपको ये नहीं पता कि किस किस टेम्परेचर कंडीशंस के अंदर आपकी मशीन या आपका पार्ट ऑपरेट कर सकता है, then perhaps you need to add a more of a design factor into your computations. ठीक है. और प्रैक्टिकली आपको क्या करना पड़ेगा प्रैक्टिकली एज अ डिजाइनर. once again I would like to reiterate this thing that design is an iterative process. ये बार बार करना पड़ता है. एक ही पार्ट के लिए एक ही मटेरियल को जो सा होता है हो सकता है या डिफरेंट मटेरियल्स को आपको परखना पड़े मुख्तलिफ डिज़ाइंस के साथ. और इस सारे प्रोसेस के अंदर आसानी हमें देगा जो हमारा सॉफ्टवेयर टूल्स हैं या जो कंप्यूटेशनल टूल्स हैं वो हमें आसानी दे सकते हैं. लेकिन once again it's an iterative process. So for every design decision you need to test it against the cost of achieving it. हर स्टेज के ऊपर हर डिसीजन के ऊपर अपनी ये आदत बना लें. एज अ गुड डिज़ाइनर, एज अ गुड इंजीनियर आपने कॉस्ट को ज़रूर देखना है और उसके मुताबिक डिसीजंस लेने हैं.
किसी भी कंपनी में जाओगे, कोई भी स्टार्टअप शुरू करोगे, कोई भी काम करोगे, तो वहां पे eventually it comes down to cost optimization and the cost considerations. फिर मटेरियल अवेलेबिलिटी को देखा जाता है, मटेरियल किस फॉर्म में अवेलेबल है उसको देखा जाता है, रॉ मटेरियल जो आपकी प्रोडक्ट का होगा उसको आप किस तरह से लेके आओगे उसको देखा जाता है, मार्केट में किस तरह से अवेलेबल है, बाहर से किस तरह से अवेलेबल है। इन चीज़ों का भी एज एन इंजीनियर, especially if you are working in sales department या if you're working in the design department, तो इन चीज़ों का पता होना चाहिए। या प्रोक्योरमेंट के अंदर भी जो सा होता है इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है। देन देयर आर मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशंस, कि क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, क्या ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस है, ज्योमेट्री की डायमेंशन क्या हैं, टॉलरेंसेस क्या हैं, सरफेस फिनिश क्या आपको जो सा होगा चाहिए होगी, ये सारी चीज़ें जो सी होती हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। एंड इन मोस्ट जनरल डिज़ाइन कंडीशंस, आपने अपने डिज़ाइन को कॉम्पैक्ट रखना होता है, छोटे से छोटा जिसमें काम हो जाए। सो साइज इज ऑल्सो अ बिग कंसिडरेशन। तो अनलेस योर एप्लीकेशन एग्जैक्टली रिक्वायर्स फॉर लार्जर साइज और वेट, आपकी कोशिश हमेशा यही होती है कि लाइटेस्ट वेट मटेरियल इस्तेमाल करते हुए सस्ते से सस्ता जो सा है वो काम जो सा वो किया जाए, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सेफ्टी, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनी ऑफ द फीचर्स जो आप उसके अंदर प्रोवाइड करना चाहते हो, उस सारे के साथ साथ आप क्या कम से कम जो सा होगा वो कीमत में कम से कम वेट के अंदर काम कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज एन ऑप्शन टू यूज टाइटेनियम एंड स्टील, तो टाइटेनियम इज लाइटर इन वेट बट इट्स मोर इन कॉस्ट, तो आप वहां पे एक डिजाइन डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप क्या मटेरियल उसके अंदर यूज कर सकते हो। Also, once you finalize the design, तो आपको जो सा होगा स्टैंडर्ड और प्रेफर्ड साइजेस भी देखने पड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे चीज़ें इस्तेमाल होंगी आपके डिज़ाइन के अंदर दैट यू कैन एक्चुअली बाय ऑफ द शेल्फ। फॉर एग्जांपल रिवेट्स हो गए, फॉर एग्जांपल बोल्ट्स हो गए, फॉर एग्जांपल उसके अंदर हो सकता है कुछ पुलीज यूज हो रही हैं, शीव्स यूज हो रही हैं उसके अंदर हो सकता है कुछ बेरिंग्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है बेरिंग भी आपने खुद बनाना है। बेरिंग आप, बहुत सारी कंपनीज हैं जो सेल करती हैं मार्केट के अंदर, बेरिंग आपने सेलेक्ट करना है उसमें से। तो वो बेरिंग जब आप सेलेक्ट कर रहे होगे, लेकिन आपने अपने डिज़ाइन के अंदर क्या चीज़ देखनी है कि किस साइज़ में अवेलेबल है कमर्शियली बेरिंग्स। हर साइज़ का बेरिंग अवेलेबल नहीं होता, तो आपने उसके मुताबिक जो सा होगा अपने डिज़ाइन को मॉडिफाई करना है या सिलेक्ट करना है या अपनी शाफ्ट के डायमीटर्स को चेंज करना है। तो इन चीज़ों का जो सा होगा वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड और प्रेफर्ड साइजेस कौन से अवेलेबल हैं, बिकॉज दोज स्टैंडर्ड साइजेस वुड बी चीपर इन द मार्केट। अगर आप कोई कस्टम साइज परचेज करोगे किसी बेरिंग मैन्युफैक्चर कंपनी से, maybe if your order is large enough and you have a lot of products to be made of a single type, तो maybe वो आपको supply कर दें but they would be more expensive। तो नॉन स्टैंडर्ड आइटम्स की प्राइस भी उस तरह से ज़्यादा होती जाती है। अच्छा, फिर प्रोडक्शन से पहले I'm not sure if we can reach the later chapters of the book, the later stages, लेकिन ये असल में टॉलरेंसेस को आपको स्पेसिफाई करना होता है। इफ देयर इज मशीनिंग रिक्वायर्ड, आपको बताना पड़ेगा कितनी क्लोज टॉलरेंस के साथ वो मशीनिंग होनी चाहिए, क्या सरफेस फिनिश होनी चाहिए उसके ऊपर। जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो किस तरह की फिटिंग क्रिएट होनी चाहिए डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर। So sometimes the materials are fitted together using a loose fit. Sometimes they have to be fit together using a tight fit. तो उसके हिसाब से उसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। और सरफेस फिनिश उन प्रोडक्ट्स के अंदर और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जहाँ पे यू आर कंसिडरिंग फटीग स्ट्रेंथ। मल्टीपल टाइप्स ऑफ लोडिंग आर देयर, साइक्लिक लोडिंग हो सकती है वहाँ पे। सरफेस फिनिश जो सी है वो ज़रूरी होती है, लेकिन कितनी सरफेस फिनिश के साथ गुजारा हो सकता है, काम हो सकता है, काम अच्छे तरीके से चल सकता है, प्रोडक्ट सेफ हो सकता है,
वेरी हाई सरफेस फिनिशेस आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। तो उस लिहाज से आपको अपनी कॉस्ट को चेंज करना पड़ेगा। सरफेस फिनिश की एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि जब आप सीएनसी पे मशीन कर रहे होते हो, यूजुअली टू अचीव अ गुड और बेटर सरफेस फिनिश दो चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। पार्ट फीड का, कि कितनी आराम आराम से आप टूल को फीड देते हो अपने पार्ट के अगेंस्ट, और उसके अलावा सेकेंडरी डेप्थ ऑफ कट का। तो डेप्थ ऑफ कट कम से कम रखा जाता है और पार्ट फीड को कम से कम रखा जाता है फॉर अचीविंग अ बेटर सरफेस फिनिश। थोड़ा थोड़ा मटेरियल रिमूव हो, स्मूथली रिमूव हो। लेकिन उसकी वजह से होता क्या है, मशीनिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, टूलिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। तो सरफेस फिनिशेस को जहन में रखते हुए टॉलरेंसेस को स्पेसिफाई किया जाता है। और जो, अगर आपने टॉलरेंसेस की जहाँ पे बात हो रही है, अगर आप चाहते हो कि आपने 100 पार्ट्स जो से वो बनाने हैं और उन सारों की डायमेंशन एग्जैक्टली सेम हो, उसके अंदर कोई किसी तरह की चेंजेस एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उतना ही आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आपको ज़्यादा एक्यूरेट प्रोसेसेस की तरफ जाना पड़ेगा, ज़्यादा एक्यूरेट मशीनिंग की तरफ जाना पड़ेगा, एंड द कॉस्ट वुड बी हायर फॉर डेवलपिंग दो सेम 100 पार्ट्स। लेकिन if your design caters for that as well, टॉलरेंसेस आप ज़्यादा स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आपके डिज़ाइन के अंदर गुंजाइश है कि ज़्यादा बेहतर उसको आप जो है वो वेरिएशंस को हैंडल कर सकते हो, तो फिर you can have 100 parts produced with some loose tolerances, and they would be much cheaper than producing parts with higher tolerances. इसी तरह से क्लियरेंसेस होती हैं, फिट्स होते हैं, दैट हैव टू बी डिफाइंड। और फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस होते हैं पेंटिंग के, प्लेटिंग के, दैट में आल्सो अफेक्ट द फाइनल डायमेंशंस। उसके बारे में भी आपको जहन में रखना पड़ेगा। तो आपने ये देखा कि बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन के अंदर, मशीन एलिमेंट्स के, ये मैकेनिकल डिज़ाइन के अंदर मटेरियल सिलेक्शन से भी ताल्लुक़ रखती हैं। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एक्चुअल डिज़ाइन वैल्यूज़ और द इक्वेशंस। यहाँ पे मटेरियल सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मटेरियल सेल्फ भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग और उसकी हैंडलिंग, ये सारी की सारी चीज़ें आपने जहन में रखते हुए अपने डिज़ाइन को प्रोसीड करना होता है। सो नेक्स्ट टाइम we'll start working on with chapter number 7। वहां से अब हम जो सा होगा वो एक स्टार्ट लेंगे। दिस इज सेक्शन 2 ऑफ द बुक दैट विल कंटेन स्टार्ट विद और बिगिन विद द डिजाइन ऑफ पावर सिस्टम, mechanical power transmission systems. So one of the power transmission systems is belt and chain drives। हम वहां से स्टार्ट लेंगे किस तरह से आपने मैकेनिकल एप्लीकेशंस के लिए बेल्ट ड्राइव्स को चूज करना है, सिलेक्ट करना है, डिजाइन करना है, मटेरियल्स किस तरह से सिलेक्ट करने हैं, क्या उनकी टाइप्स अवेलेबल हैं, उसमें किस तरह की डिज़ाइन कंसिडरेशंस होती हैं, किस तरह के डिज़ाइन फैक्टर्स को आपने जहन में रखना है और उसकी बुनियाद पे किस तरह से उनको आपने अप्लाई करना है। So the next section, the upcoming lectures would be the core of the subject, और हम उसकी बुनियाद पे जो सा होगा उसको लेके चलेंगे। अब तक हमने कोशिश की है कि ऐसे क्राइटेरियाज को, ऐसी चीज़ों के ऊपर बिल्डअप करें that would help us in designing the actual mechanical systems, और उसकी बुनियाद के ऊपर हम decisions लेंगे। So a reminder for next